And now I'm going to share. As in the first session in the morning, we already have done the theory part in GIS, that whatever the theory part, what is the background in GIS for the application in civil engineering, as it is the latest technology. So I'm going to continue with the first one, and I'm going to give you the brief introduction first. Then I'll start with my practical part. So my first question is, what is GIS? That is Geographic Information System. Is a system intended to capture, store, manipulate, analyze, manage, and present all types of geographical data. Here the term is very much important, that is geography. Geography GIS क्योंकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है where we have to put the latitude and longitude to connect the spatial data with the non-spatial data. So here the term which is we call is geography. It is very much important, and we have to first understand that what is the background behind this software which works in the manner to capture and to store data and to helps in the decision making process for the planners and the engineers. The first thing is geographic information system. It can capture the data, store the data, manipulate the data, analyze the data. Analysis part, it can be done in the GIS in a vast manner, and it is very much helpful not only for the engineers but also for the planners, for the geographers in the decision making process. Now come to the second slide. Why we need GIS? Here the thing is, what can we do with the GIS? GIS can be used as tool in both problem solving and decision making processes, as well as for visualization of data in a spatial environment. You can see the image that this is our real world. This is our real world, and these are our different layers. This can be done in the GIS. We have taken the imagery first. There are various sources from where we can take the images, and then we can digitize the data and we can analyze the data. And this is, we can do the elevation part. It can be helpful in transportation, addresses, boundaries, water features, survey control. And then we can also add not only these data, which is images, we can also add our primary data or any other data, like we can add also the census data, right? We can also add our primary data, which we can go to the fields and collect the data, and we can join this data in GIS and can create the vast number of maps in a presentable manner, and which can help in our decision making process and our analysis. So the GIS basically is a very vast tool. We can do a lot of processes in this, which I will in the next slide I will show you that what are the things which we can do with the help of the GIS software. In the first session, I hope, I am assuming that you already have understood that what is the background of the GIS. So I'm going to continue with the next one. So here is the types of GIS data, raster data and the vector data. Raster data, which we can see like the photographs, which is in the pixel form, pixel by pixel, right? This is the raster data, and vector data is the
discrete data, and it is in the form of line, polygon, and point. And raster data is the continuous data, and vector data is the discrete data. Now, application of GIS in civil engineering. Now we are coming to the point now that it helps in urban development, environment impact assessment, that what is the effect of environment right now in our area, right? कि हमारे उसमें टेम्परेचर, वाटर बॉडीज एंड द स्पेशल डेटा को हम उससे कनेक्ट करके एक बहुत अच्छा इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर एरिया है, लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द एरिया ऑफ दिल्ली यमुना रिवर, तो हम लोग कि उसके नियर बाय एरियाज़ में क्या क्या हो रहा है, क्या बिल्डिंग्स हैं, क्या कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस हो रहा है, या फिर वहाँ का टेम्परेचर, ग्राउंड वाटर टेबल है वहाँ की, जिससे हम लोग, और वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हो रही हैं जो हमारी यमुना को गंदा कर रही हैं या फिर हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रही हैं, ये तो वो सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वाटरशेड एनालिसिस. वाटरशेड एनालिसिस में आप लोग पूरा कैचमेंट एरिया इसमें बहुत अच्छा से एनालिसिस कर सकते हो. वी कैन टेक द इमेजेस और फ्रॉम द सैटेलाइट एंड वी कैन हम लोग स्ट्रीम्स का, रिवर्स का इसमें बहुत अच्छे से वाटरशेड एनालिसिस कर सकते हैं टू स्टडी अबाउट द watershed catchment areas. Next is transportation. ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, फ्लाईओवर्स बनने हैं, नेटवर्क का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, विच यू कैन डू. रिस्क मैनेजमेंट हम कर सकते हैं. लैंडफिल साइट सिलेक्शन, व्हाट इज द बेस्ट suitable site for the landfill for a particular city. It can be any city, and we have to take the many data, many factors we can say, which decides the landfill site selection. And in GIS we can do it in a very technical manner. Next is infrastructure design. इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन में रोड्स हैं, आपके बिल्डिंग्स हैं, सीवरेज नेटवर्क है, ड्रेनेज का पार्ट है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. आई विल शो यू द केस स्टडीज एज वेल इन माय presentation, that how we did it and how we can do it. And then next is natural hazard assessment, and next उसके बाद है resource management. Now here comes with the remote sensing, as GIS is the software on which we can analyze the data. But there is one more thing, हम जिसको GIS से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो उसी के साथ ही काम करता है, that is remote sensing, in which we can say that remote sensing is the process of detecting and monitoring the physical characteristics of an area by measuring its reflected and emitted radiation at a distance. This is very much important in this remote sensing, by measuring its reflected and emitted radiation at a distance, typically from satellite or aircraft. रिमोट सेंसिंग में हम लोग टच नहीं करते हैं ऑब्जेक्ट को, बट जो उसका रिफ्लेक्शन होता है, जो हमारे पर्टिकुलर एरिया का जिसका हम कलेक्ट कर रहे हैं डेटा, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है या जो एमिट कर रहा है रेडिएशन को, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैप्चर द डेटा. Special cameras collect remotely sensed images which help researchers sense things about the Earth. Some examples are cameras on satellites and airplanes take images of large areas on the Earth's surface, allowing us to see much more than we can see when standing on the ground. Because अब सैटेलाइट से जो कि स्पेस में है और through the airplanes, we can take the images of large areas on the Earth's surface, so that our area of study or area of understanding would be large. So it is very much helpful in many like risk assessment, natural disaster management में ये बहुत ज़्यादा काम करता है. Cameras on satellite can be used to make images of temperature changes in the oceans.
some specific uses of remotely sensed images of the Earth include large forest fires can be mapped from space, allowing rangers to see a much larger area than from the ground. Tracking clouds to help predict the weather, or watching erupting volcanoes and help watching for dust storms. Now, next is tracking the growth of a city and changes in farmland or forest over several years or decades. In this, we can overlap the several years data, whether it is of the if we want to study about the settlement pattern, कि इतने साल में many years में क्या क्या चेंजेस पर्टिकुलर एरिया में हुआ है और किस तरफ हमारी सिटी ग्रो कर रही है, तो वी कैन अंडरस्टैंड इट इन वेरी वेल मैनर with the GIS, with the images. ठीक है. Next is discovery and mapping of rugged topography of the ocean floor, that is huge mountain ranges, deep canyons, and the magnetic stripping on the ocean floor. Now, here I have already given the brief background study about the GIS and the remote sensing, that what are the Now, first, we are going to start with the georeferencing part in the GIS. As we already have told you that what is the GIS, that term geography. So for this, we need latitudes and longitudes, because as we already all know that Earth is not the flat surface, it's the ellipsoid. So for this, we have to create the different grid systems to draw the maps in a very effective manner. So georeferencing means that the internal coordinate system of a map or aerial photo image can be related to a geographic coordinate system. Simply says converting the 2D surface into 3D surface with the help of latitude, longitude, and UTM. I hope you all know what is latitude, longitude. These are not the lines actually happen on the ground or on the surface, but it is all the imaginary lines which helps us to understand the area, distance. And what is, now I'm going to tell you the UTM. UTM is the acronym for Universal Transverse Mercator, a plane coordinate grid system named for the map projection on which it is based, transverse Mercator. The UTM system consists of 60 zones, each 60 degrees of longitude in width. So for the GIS, it is very much necessary to understand the Universal Transverse Mercator or UTM. It is, however, the grid system through which we can georeference our image, so that we can further work on that image. We can calculate the area. We can see that which area is where. Coordinate system. There are two coordinate systems. First is geographic coordinate systems. Next is projected coordinate systems. Both examples are coordinate systems. The difference is that WGS 84 is a geographic coordinate system. This is very much important for the GIS work. If we have to work in the GIS, we need WGS 84. This is the basic concept I'm giving you here. For the local level, it can be something else. Okay. But for the world view, we can take the WGS 84. Before we start working on GIS, first thing we have to understand this WGS 84, which is a geographic coordinate system, and UTM is a projected coordinate system.
Geographic coordinate system are based on a spheroid and utilize angular units, which is in degrees. And the next is projected coordinate systems are based on a plane, the spheroid projected onto a 2D surface and utilize linear units, feet, meters, etc. So there is a difference in geographic coordinate system and projected coordinate systems. Geographic coordinate system में हम डिग्रीज से मेजर करते हैं, बट प्रोजेक्टेड में हम लोग को फीट meters. So when we will work in GIS, so the image should be projected before we start working, and it should be, because we have to calculate the area, so that should be in the feet or meters or centimeters or any whichever you want to. So this is the image we can, through which we can clearly understand about the geographic coordinate system, and this is the projected coordinate system. GEC is round and so records locations in angular units. This is degrees, which we can see latitude, longitude, and that is all. A PCS is flat, so it records location in linear unit, usually meters. Or at the local level, we can take the another, which is more effective for particular region to draw or to understand the particular region. Now, this is the datum. What is datum? The earth is shaped like a flattened sphere. This shape is called an ellipsoid. A datum is a model of the earth that is used in mapping, which I already have told you कि जो earth है वो एक flattened sphere है. This shape is called an, जिसको हम ellipsoid कहते हैं. So a datum is a model of the earth that is used in mapping. The datum consists of a series of numbers that define the shape and size of the ellipsoid and its orientation in space. A datum is chosen to give the best possible fit to the true shape of the earth. There are a large number of datums in use. Many of them are optimized for use in one particular part of the world, which I already have told you. An example is the geodetic 1949 datum that has been used in New Zealand. Another example is familiar to GPS users, is the WGS84 datum, which is an example of a datum that is used globally. Now these are the different images for the GIS software. What are the images we can take for the georeferencing purposes? However, some of the images may be georeferenced already, as with the available technology or the latest technology, Google Earth also provides us the georeferenced image. This one is the quick bird satellite imagery. We can see here, this is the quick bird satellite imagery, which is the high resolution data. And this is the aerial photo. And this is the administrative division, which is the digitized map, and we can take it. And this is the topo sheet. Now the next is the multispectral images. Generally refers to 3 to 10 discrete border bands. Hyperspectral images, these are the satellite images which we take with the remote. These are all the remote sensing data. Hyperspectral imagery consists of much narrower bands, 10 to 12 nm. Hyperspectral image could have hundreds of thousands of bands. Hyperspectral and multispectral images have many real-world applications. For example, hyperspectral imagery has been used to map invasive species and help in mineral exploration. तो ये सबसे ज़्यादा सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है hyperspectral images. These are the different types of multispectral images. That is the natural color. This is the color infrared. As you already, I hope in the first session you already know कि किस तरह से एक bandwidth होता है, और हर bandwidth में radiation जो है, reflection जो है, अलग अलग ऊपर जाता है, जिसकी
उसी से ही हमारा एक इमेज निकल कर आता है। तो ये अलग अलग उसमें होता है, ये नेचुरल कलर का है, ये कलर इंफ्रारेड है, लैंड एंड वाटर। तो अलग अलग ब्रांड अलग अलग हमें इमेजेस प्रोवाइड करते हैं। Now we are coming to the georeferencing part, that how we are going to do this, because this is one of the most important and the first step in GIS. Because GIS is not only about the digitization of data, which we can do in AutoCAD also. However, AutoCAD also works as a GIS software, but the thing that in AutoCAD we have to do a lot of things manually. We have to draw each and everything. But in the GIS softwares like ArcGIS and many other softwares, we can do it very easily. I will show you in my further slides. So I'm going to show you. Now you can see how we can georeference our data. First, we have to take, this is the ArcGIS software, and now from I'm going to take the JPEG format data. This is the topo sheet data. We have clicked the data frame properties here. WGS 1984 UTM zone 44 north, because this is the topo sheet of coastal area in India. We have started taking the points. And these are the latitudes and longitudes, which we can see 86, 15, 20. Now we are going to do the input. This is the longitude and latitude. We have put the same exact longitude which was written in that. We are putting the all the latitude longitudes of the, we will take only 4 points in this: east and north. I'm going to tell you that as we are in the northern hemisphere and the eastern side, you can see that E और N आप देख रहे हो, इन दोनों पर जरूर क्लिक करना है, because we are in the northern hemisphere. This should be taken into the consideration that we are connecting. This is the last point we are going to take. Input DNS, longitude, (8615). In the first session, I hope you already got to know about the latitude and longitude and the eastern, northern hemisphere, southern hemisphere. So I'm going to save this file.
Now this is we have started the georeferencing, where we have to save the data. In which format we need? Basically we work in the image format. So we have taken that format, image, img, imagine, and we it is taking some time. Okay, no. Now we are going to add the data, which is georeferenced now, because we already have done our part of georeferencing. So we have done our part of georeferencing. I hope you all got to know that what is the process through which we can do the georeferencing in GIS. This is one of the most and first step to start work on the GIS softwares. If anybody has any question, please आप लोग मुझसे पूछ दीजिएगा in the end of my lecture session कि जियो प्रोसेसिंग का लिए आपको बैकग्राउंड ड्यूरिंग द प्रोसेस. अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है ये टोपो शीट की हेल्प से दिखाया था कि हमने टोपो शीट ली है. हम लोग इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं क्योंकि ये सबसे बेसिक है, सबसे इम्पोर्टेंट है. सो आई हैव टेकन द टोपो शीट right now. Like we can take the Google Earth images as well, and Google Earth से ही हम लोग पॉइंट्स ले सकते हैं जिससे जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वहाँ से आप लीजिए और आप उसको हेल्प से GIS पर उसका कर सकते हो. आई विल शो यू in my further slides that how it happens. And one more thing I'm going to tell you about the Google Earth. However, the Google Earth images are not the very high resolution. It is 30-meter resolution data, and we can take the points from Google Earth and georeferencing can be done. However, अब तो Google Earth भी जो है आपको georeference data दे देता है. लेकिन क्योंकि हाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम लोग को georeference data दे देंगे, but to make you understand कि जियोरेफरेंसिंग का क्या काम होता है, दैट इज व्हाई तो वो दिखा लो. अभी फोन पे बात सुन रहे थे ना दोनों. sorry. Now next is the step of shapefile. To create the shapefile in the GIS software, after georeferencing we start with the shapefile. Like जैसे आपने अगर AutoCAD में स्पेशली सिविल इंजीनियर्स जो काम करते हैं वो AutoCAD को बहुत यूज करते हैं, तो आप लोग में करते हैं ये सब काम करते हैं, बट हम लोग सीधा सीधा उसमें जाते हैं, इमेज पुट करते हैं एंड वे स्टार्ट डिजिटाइजेशन. सेम मेथड इज अप्लाइंग हियर कि हम लोगों को यहाँ पर इमेज ऐड करके वी हैव टू स्टार्ट विद द शेप फाइल डेटा
and then I will tell you that how we can uh, add the attribute data on this shapefile. And in the shapefile, this is the vector data which we create. So a shapefile is a simple non-topological format for storing the geometric location and attribute information of geographic features. And next is geographic features in a shapefile can be represented by points, lines, or polygons. Now you should we are very clear about that कि geographic features जो हम shape file में बना सकते हैं वो points से दिखा सकते हैं, line से दिखा सकते हैं, polygon से दिखा सकते हैं, multi polygon use कर सकते हैं. I will show you in the next. This is our area of interest which we have taken for the shape file. This is our image which I have taken. Now we have to go to this the red box. This is the ARC toolbox where we can go to that data management, please. In this feature class, then create feature class. This is the folder where we put our image. What is the feature? जो भी आपको attribute देना है, उसको building है, कुछ भी है. So I'm here giving you the building name and now you can see that this layer has come. Building का जो हमने वहाँ नाम दिया था वो आ गया है. ठीक है. अब हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से हम अपना काम कर सकते हैं. This is the when we click right click ये आएगा and now we have to start the start editing. We are going to create the polygons. We have created that polygon. This is very much similar to that which we can do on AutoCAD also. And you know what? Whatever I am going, this is the polygon 1, this is the polygon 2. ये इन सब का एक attribute है जो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हम सारे attributes को मेटा डालकर और हम लोग इसको एक्सेल फाइल भी इन सब पॉलीगन जो हम बना रहे हैं ईच एंड एवरी पॉलीगन हर उसमें हम लोग एक डेटा क्रिएट कर सकते हैं. एक्सेल फाइल में तैयार कर सकते हैं. एक्सेल में भी कुछ लिमिट होती है. तो इफ वी आर हैविंग द ह्यूज डेटा लाइक lakhs of data, so we can use the Microsoft SQL. Now you can see this.
we can add to stop the editing. We have to stop the edit now. We have can give the another feature, take the text. This column has been added. Whatever attribute you want to give, the name of the polygon, whatever is the name of this, if it's a tree or a water body or or a specific name of any building like school है या commercial area है या industry है कोई, we can give the name of in this attributed data. This is the table of attributes. We can add the data here as well. This is the now to calculate the area. It is very much easy. आपको जिसमें भी चाहिए, स्क्वायर मीटर में चाहिए, स्क्वायर किलोमीटर में चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे लोगों ने दिए हुए हैं ना, हेक्टेयर है, वट एवर यू वांट। आप टेकन द, यहाँ पर आपका स्क्वायर फीट एरिया आ गया। आपको सिर्फ एक ड्राइंग करनी है। दिस इज द मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द जीआईएस फाइल। फर्स्ट वी हैव टू डिजिटाइज द डेटा, उसके बाद बहुत सी चीज़ें उसमें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, फिर उससे आप बहुत सारी फाइल्स भी बना सकते हैं। Now next is the data link and import. We can add data from Excel data. I have shown you that how we can create the shapefile and how can we add the attribute data in the ArcGIS as well, or in any Sphere, not only in ArcGIS. And as well we can import the data from the Excel or Microsoft SQL, or because these are the formats which is supporting in this. So, and we can create the different shape files. I will show you. At the time of attribute data, we have to think very much taken into the consideration about the unique ID through which we can join and relate the data in Excel and GIS. The ID through which we can join, it should be same in the shapefile and in the Excel file. Then we can join and relate data will be added into shapefile, and then we can create the different maps of layers. I can show you this, and I wanted to show you this, but due to some network issue, I'm not able to show it right now, but I hope I'll show it. We can do this map layout as well. By creating the shapefile, and these are the all the what data. This is the data of Agra Municipal Corporation. This is the map which we have prepared on GIS. This is the water body. You can see this is the water body, Yamuna River, and these are all the wards. This is the cantonment area. This is the scale which we already have done on GIS. Now one more thing I want to tell you about the GIS. ये GIS में जो मैंने अभी बताया वो तो हो सकता है, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो दिस इज़ द लिस्ट है जियो स्पेशल एनालिसिस की, दैट इज़ डेटाबेस क्वेरी, वेक्टर डेटा क्वेरी। फर्स्ट जियो स्पेशल एनालिसिस में जब हम स्टार्ट करते हैं डेटाबेस क्वेरी से, तो दो तरह की क्वेरी है। फर्स्ट इज़ वेक्टर डेटा क्वेरी, सेकेंड इज़ द रास्टर डेटा क्वेरी। तो क्वेरी बाय एट्रीब्यूट, क्वेरी बाय स्पेशल डेटा, जो कि वेक्टर डेटा क्वेरी में आता है। तो रास्टर डेटा क्वेरी में क्वेरी बाय पिक्सल वैल्यू, क्वेरी बाय एट्रीब्यूट, क्वेरी बाय स्पेशल डेटा। आप इन सब में हम लोग जैसे क्वेरी बाय एट्रीब्यूट है हमारा, तो जब हम बात करते हैं क्वेरी बाय एट्रीब्यूट में, इसमें तीन तरह के होते हैं। रिलेशनल क्वेरी होती है, अर्थमेटिक होती है, बूलियन होती है।
तो एट्रीब्यूट में क्या लेस देन or more than, because the time is less is here, only 2 hours, and it is very much difficult to tell you each and every and to show you each and uh, every analysis, so I'm going to give you just a brief description about all that, कि हम लोग रिलेशनल क्वेरी में लेस देन मोर देन से हम कर सकते हैं, which comes under the query by attribute. Then the arithmetic query इस प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं इफ यू वांट थर्ड आउटपुट, कि अगर हमने एक डेटा को दूसरे से प्लस माइनस किया तो व्हाट विल बी द थर्ड आउटपुट. एंड देन थर्ड वन इज बुलियन, इफ दैट व्हाट प्लेस कहाँ है, एट और या कहाँ हो सकता है, these comes under the query by attribute में. Then we come the query by special data. स्पेशल मतलब स्पेस, दो एरियाज का हमें निकालना है, उसमें हम ये कर सकते हैं. रास्टर डेटा क्वेरी है, क्वेरी बाय पिक्सल वैल्यू, क्वेरी बाय एट्रीब्यूट, क्वेरी बाय स्पेशल डेटा. वेक्टर और रास्टर का जैसे कि आप क्लियर पहले ही समझ चुके हो कि वेक्टर में हमारा लाइन, पॉलीगन ये सब होता है, रास्टर में पिक्सल बाय पिक्सल, पिक्सल बाय पिक्सल होता है. तो उस पिक्सल वैल्यू में ही एट्रीब्यूट भी होता है, स्पेशल डेटा भी होता है, जिसकी क्वेरी हम इसमें कर सकते हैं. Now second is geospatial measurement. Geospatial measurement, measurement by density, measurement of distance. Measurement by density, like for example population density. We can see here to which area, or not only population, trees density, whatever you want to see here. आपको यहाँ पर ये measurement by density हम कर सकते हैं. And measurement of distance यहाँ पर इजीली हो सकता है. सेकेंड फिर आता है ओवरले ऑपरेशन, वेक्टर ओवरले, रास्टर ओवरले. बिकॉज जीआईएस में हम लोग वेक्टर और रास्टर में ही काम करते हैं. तो वेक्टर ओवरले, पॉइंट ऑन पॉलीगन, लाइन ऑन पॉलीगन, पॉलीगन ऑन पॉलीगन. Like we have created the polygon in the previous slide, so and we can create the another shape file of line, we can create the another file of polygon or point, and we can overlay all the layers and we can analyze the data as per our requirement, as per our need. Same happen in the raster overlay. Like if we want to see the temporal data, मतलब टाइम के इन पर्टिकुलर उसमें हम कैसे सेटलमेंट था, या वहाँ रोड थी, और या वहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है इन पर्टिकुलर सिटी, इन पर्टिकुलर एरिया. तो रास्टर ओवरले में you can take the images of the previous years and the recent years, and you can overlay the data, and we can see the difference in the settlement pattern, in the road pattern, in the development pattern of particular city, of a particular area, whatever you want to see. Next is the network analysis. This is I'm going to give you the all the analysis के इसमें हम GIS में हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्वेरी कर सकते हैं, क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, क्या ऑपरेशंस इसमें हो सकते हैं, और किस किस उसके कर सकते हैं. जैसे अब हम नेटवर्क एनालिसिस की बात करते हैं, तो आप लोग ने शायद GPS जैसे यूज़ किया है अगर लोगों ने, तो उसमें जैसे हम लोग GPS में रूट देख लेते हैं कि अच्छा अगर हम इस रूट से जाएंगे तो ये हमें नज़दीक पड़ेगा या ऐसे सही रहेगा. तो कुछ आप इसको ऐसा कह सकते हो. तो नेटवर्क ट्रेसिंग, नेटवर्क रूटिंग, नेटवर्क एलोकेशन. नेटवर्क एलोकेशन में, नेटवर्क ट्रेसिंग में कि ये जगह एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूर है, बाय रोड कितना है, रोड में ही पक्का है, कच्चा रोड है, बाय एयर है. तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं थ्रू विच वी कैन डू.
ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाने में या ट्रांसपोर्ट की स्टडी करने में दिस इज़ वेरी मच हेल्पफुल, नेटवर्क ट्रेसिंग। इसमें आप नेटवर्क एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हो कि आप पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर लोकेशन से, फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर टेकिंग द इन दिल्ली में जैसे फ्लाईओवर्स के लिए ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग किस तरह से इसको कर सकते हैं, क्या इसका इफ़ेक्ट हो सकता है, ये सब कुछ। क्या पर्टिकुलर एरिया जैसे है या किसी ने पर्टिकुलर एरिया है, रोड है वहाँ पर, और हम लोगों को ये देखना है कि हमारा बफर एरिया क्या रहेगा, तो ये सब कुछ हम इसमें कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है सरफेस एनालिसिस। सरफेस एनालिसिस में हम लोग जो इमेज हमें मिलती है, सैटेलाइट इमेजेस जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी, तो उससे हम लोग कंटूर्स ले सकते हैं, जो कि हमें वाटर मैनेजमेंट में हेल्प करता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी हेल्प करता है, और हमारा ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। स्लोप, ड्राइविंग स्लोप, उसके बाद ड्राइविंग एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मतलब डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होगा, ये आप देख सकते हो। हिल शेड एनालिसिस, व्यू शेड एनालिसिस, वाटर शेड एनालिसिस। वाटर शेड एनालिसिस में क्या क्या कैचमेंट एरियाज होंगे, रिवर्स का क्या जो उनका फ्लो है किस तरह से है, क्या कैचमेंट एरिया हो सकता है, तो हम ये सारे एनालिसिस बहुत इजीली यहाँ पर आराम से विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेजेस हम ये कर सकते हैं। फिर सरफेस इंटरसेक्शन है, स्पेशल ऑटो करेक्शन, ऑटो कोरिलेशन, इंटरपोलेशन। उसके बाद है जियो विजुअलाइजेशन। जियो विजुअलाइजेशन में क्लासिफिकेशन एंड रिक्लासिफिकेशन। अगर आप लोगों ने जैसे रिमोट सेंसिंग का डेटा अगर हम लेते हैं, तो हम लोग क्लासिफाई करते हैं डेटा को। Like for example, I will show you the data in my coming slides कि क्लासिफिकेशन और रिक्लासिफिकेशन हम पर्टिकुलर डेटा का ऑन द मैप कैसे किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन में लाइक हमें लैंड यूज का मैप बनाना है, फॉर जैसे कि मास्टर प्लान बनता है तो उसमें लैंड यूज मैप बनेगा, तो लैंड यूज मैप उसका क्लासिफिकेशन हम देते हैं। या फिर हम पॉपुलेशन का डेटा बनाते हैं, पॉपुलेशन डेटा हमें मैप पे शो करना है, तो हमें देखना है कि क्या कितनी पॉपुलेशन कहाँ पर है, कितने से कितनी तक कहाँ है, या फिर जैसे लैंड यूज में कि कमर्शियल एरिया कहाँ है। दिस इज द क्लासिफिकेशन जो मैं बता रही हूँ कि क्लासिफाई हम कर सकते हैं, और उसको फर्दर क्लासिफाई भी कर सकते हैं आप। फिर मैप कंपैरिजन हो सकता है, चार्ट आप दिखा सकते हो जो ग्राफ होता है, रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, मैप लेआउट जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया भी था कि किस तरह से मैप लेआउट आप तैयार कर सकते हो टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल, टू मेक इट मोर इजी, टू मेक इट आई कैचिंग, ताकि आप हर चीज़ एकदम क्लियर आप देख सको। और लास्ट है 3D विजुअलाइजेशन। 3D विजुअलाइजेशन आप 3D फीचर एनालिसिस में जाकर आप 3D आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो, उसे बनाकर आप दिखा सकते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सिविल इंजीनियरिंग के लिए। Now we are coming to the case study of Firozabad, which is the live case study of city sanitation plan. सिटी सैनिटेशन प्लान से अगर आप समझ रहे होगे तो इसमें सैनिटेशन के जितने भी पार्ट है वो सब इंक्लूड किया जाता है। लाइक मैं आपको बताऊंगी अभी आप। दिस इज द फिरोजाबाद सिटी का मैंने थोड़ा सा वो बनाया है एज पर 2011 सेंसस के हमारा कितना एरिया है वहाँ पर और क्या वो सिटी है। Firozabad is located here in the district of Firozabad, which I am showing here with the arrow. And this is the location of Firozabad. This is the district map of Firozabad. And this is the Firozabad.
This is the road network which we have prepared on GIS. We can take that road, total road length यहाँ का 710 किलोमीटर है. ये लीजेंड आप देख सकते हो, रोड, रेलवे लाइन का, वाटर बाउंड्री, municipal boundary. This is the municipal boundary. These are the roads. These are the wards, which is the number has been given on the map. 1, 2, 3, 4, 5, 6. नेक्स्ट, मैं जिसकी बात कर रही थी कि हम क्लासिफिकेशन, अभी जब हम बात कर रहे थे कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कर सकते हैं, तो ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया था, ये हमारा सेंसस डेटा था जो 2011 के डेटा से हमने लिया था, इंडिविजुअल हाउस होल्ड वाटर कनेक्शंस, क्योंकि हमारा जो स्टडी एरिया था वो फिरोजाबाद था और हमारा पार्ट है सैनिटेशन का. सो हम लोगों को वाटर का देखना था, वहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी देखना था. जैसे कि अभी जो मोदी जो स्मार्ट सिटीज़ का जो स्मार्ट सिटी है, स्वच्छ भारत मिशन है, अटल है, ये सारी जो है ये कनेक्टेड हैं. तो जब हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं तो उसमें सैनिटेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, लेकिन अभी जो फोकस है वो टॉयलेट है. अटल में सीवरेज और ये सब चीज़ें आ जाती हैं. स्मार्ट सिटी उसमें के जो भी चीज़ें हैं, सीवरेज है या बहुत सारी चीज़ें जो सिटी में हैं वो स्मार्टली कैसे की जा सकती हैं. तो ये जो सिटी सैनिटेशन प्लान है, इसमें हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स लेते हैं, बहुत सारे, जैसे वाटर का लेते हैं, सीवरेज का लेते हैं, ड्रेनेज लेते हैं, स्लम लेते हैं, सॉलिड वेस्ट फैसिलिटी का लेते हैं कि क्या सिचुएशन क्या है और वहाँ क्या क्या रिक्वायर्ड है. और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमने किस तरह से जीआईएस पे क्रिएट किया है. ये हमें डेटा मिला था जो एक्सेल था, एक्सेल में डेटा सेंसस से हमने लिया और हमने उसको फिर क्लासीफाई किया है कि ये आप देखिए कि ये वार्ड बाउंड्री में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि हमें जो है वाटर कनेक्शंस यहाँ देने हैं. और ये जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी है, मतलब ये क्लियर हमें पिक्चर दे देता है कि ये सारे वार्ड्स में इंडिविजुअल हाउस होल्ड वाटर कनेक्शंस ज़्यादा हैं, तो हमें ज़्यादा देने की इधर ज़रूरत नहीं है. तो हमारा जो फोकस एरिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए, या फिर ये सारे एरियाज होने चाहिए. यहाँ पर वाटर कनेक्शन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है लोगों के पास. एक तो फिरोजाबाद में पहले ही प्रॉब्लम था, वाटर का प्रॉब्लम है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी का. पानी या फिर जो अवेलेबल है वो पीने लायक नहीं है, पोर्टेबल वाटर नहीं है. तो वहाँ पर वाटर फैसिलिटी का भी काम हो रहा था. तो हमने एकदम क्लियर पिक्चर जीआईएस से ही दिया है. हमने डेटा को रिलेट किया जीआईएस सॉफ्टवेयर पर, जितना भी एक्सेल डेटा था हमने ये मैप क्रिएट किया, जो मैंने भी आपको शेप फाइल दिखाई थी कि किस तरह से करना है. मैं आपको अच्छे से अभी लाइव भी दिखाती, बट ड्यू टू सम नेटवर्क इशू इट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. मैं आपको ये क्रिएट करके दिखाती कि किस तरह से होता है, और मैप लेआउट हम फिर कैसे बना सकते हैं इसको कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है. ये बहुत इजी होता है, वहाँ पर भी डोंट नीड टू ड्रॉ ईच एंड एवरीथिंग, बट फर्स्ट वी हैव टू डू दिस. एंड दिस मैप इज शोइंग अस कि व्हाट इज द कंडीशन इन फिरोजाबाद. नेक्स्ट इज इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट फैसिलिटी. हमें क्योंकि वहाँ पे टॉयलेट का सिचुएशन देखना था कि वहाँ पर सैनिटेशन में टॉयलेट की फैसिलिटीज़ लोगों के पास घरों में है या नहीं है. तो आप ये देख सकते हो कि अगेन ये जो हमारा जो बार बार निकल के आ रहा था, ये आ रहा था कि ये जो वार्ड नंबर 2 है और ये थोड़ा सिटी से, मेन सिटी से थोड़ा बाहर जा रहा है, बिल्कुल मतलब बाहर, मतलब कि इधर लास्ट पोर्शन है. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी वाटर की, टॉयलेट की. आप ये देख सकते हो ये सारे वार्ड्स जो हैं यहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटी हमारी कम थी. और ये जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी था, ये एरिया जो है, यहाँ पर हमें टॉयलेट फैसिलिटी मिली कि यहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटी लोगों के पास घर में है. वहाँ इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा था, जो कि हम ये देख रहे थे कि ये बाहर था. और बाहर ये इसलिए भी था कि जब हम ये काम कर रहे थे तो हमने ये देखा कि ये जो एरियाज थे ये अभी अभी इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे फिरोजाबाद के. फिरोजाबाद बाउंड्री के अंदर ये अभी लिए गए थे. ये पहले छोटे वार्ड्स हुआ करते थे, ये अब बाद में बढ़ाए गए थे. तो उनके पास जब
मैप भी अवेलेबल नहीं था। ये मैप उन्हें हमने बना कर दिया था जीआईएस पर। उन्होंने हमें रोड बताया था कि रोड, ये रोड से ये रोड तक आपका ये वार्ड है या इस प्लॉट से इस प्लॉट तक है। तो with the help of Google Earth and with the help of the topo sheet, we have taken the area, we have marked the area and we have created the map. मतलब म्यूनिसिपल बाउंड्री का ये जो मैप है ये हमने उनको क्रिएट किया था। उन्होंने हमें डेटा प्रोवाइड किया था कि ये रोड है, इस रोड से इस रोड तक है, उस रोड से उस रोड तक है, और हम लोगों ने ये मैप क्रिएट किया एंड उनको हमने दिया ये। तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि ये सेंसस का डेटा हमने फिर इसमें रिलेट किया, स्पेशल को किस तरह से हमने नॉन स्पेशल डेटा से रिलेट कर दिया है। तो ये हम एक क्लियर पिक्चर हमें ये देख रहा है कि ये जो है ये क्रिटिकल एरियाज हमारे निकल के आ रहे हैं। ये मेन सिटी जो है वो फिर भी थोड़ा उसमें ठीक हालत है। अब फिर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस डेटाज कि वहाँ पर इंडिविजुअल फैसिलिटी है, तो फिर हमें क्योंकि पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट्स का भी रिक्वायरमेंट था, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट, ये आप देख रहे हो ये कम्युनिटी टॉयलेट, ये हमने यहाँ पर क्यों दिया है, यहाँ पर क्यों रिक्वायरमेंट है, ये क्यों है यहाँ पर। अब ये देखिए ये यहाँ पर जा रहा है रेलवे लाइन, और हमारी सिटीज़ में क्या प्रॉब्लम होती है, जब हम रेलवे लाइन में आप देखना कि ओपन डेफिकेशन बहुत कॉमन है इन इंडियन सिटीज़ में, कि जिनके पास टॉयलेट नहीं है तो वो रेलवेज के पास आप ज़रूर देखेंगे सुबह सवेरे लोग जो है आते हैं और रेलवे लाइन पर बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमने कम्युनिटी टॉयलेट का वो प्रावधान दिया था कि आप वहाँ पर कम्युनिटी टॉयलेट फैसिलिटी दें, और जो स्लम एरियाज हैं वहाँ पर दें। पब्लिक टॉयलेट आप कमर्शियल एरिया में दें। ये आप देख रहे हैं ये सारा हमारा कमर्शियल एरिया था मेन सिटी में, हमने बाहर नहीं दिया था, बाहर हमने कम्युनिटी टॉयलेट का दिया था। और ये ऑलरेडी वहाँ पर क्योंकि काम चल भी रहा था तो ये तो प्रेजेंट सिचुएशन थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये हम लोगों ने बाहर इन लोगों को फिर दिया था। स्लम एरियाज में क्योंकि हमें कम्युनिटी टॉयलेट देना था, और इंडिविजुअल टॉयलेट फैसिलिटी स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हमें हर हाउस होल्ड को देनी ही देनी थी। हमें जो क्रिटिकल एरियाज हमें जो पीछे से निकल आए थे वो ये थे इंडिविजुअल हाउस होल्ड के, और ये सारे हमारे कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट का। नाउ कम टू द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द सिटी। ये हमारा जो सिटी है ये हमारे नाले हैं, ये ना ये जहाँ से आप जा रहे हो तो ये यमुना नदी आ जाएगी इधर इधर, ये यमुना नदी में जा रहा है सारा कुछ सारा। ये यहाँ पर जो प्रॉब्लम था ये ना हाईलैंड एरिया है। मैं भी आपको शो करूँगी कि मैंने कैसे इसको जीआईएस पर क्रिएट किया था, और विद द हेल्प ऑफ डीएम डेटा मैनेजमेंट टूल में जाकर मैंने किस तरह से आपको जो मैंने अभी पीछे दिखाया था हिल शेड आप दिखा सकते हो, आस्पेक्ट का दिखा सकते हो, वो हमने किस तरह से क्रिएट किया था। ये ड्रेनेज सिस्टम का मैं ये बता रही हूँ कि जो सिटी का सारा जो पानी था ना वो इन नालों से यहाँ से जा रहा था। तो यह मैं बता रही हूँ आपको डिजिटल एलिवेशन मॉडल। दिस इज़ द डिजिटल एलिवेशन मॉडल है जो मैंने फिरोजाबाद का क्रिएट किया था। ये जो मैंने टाइल लिया है ये भुवन वेबसाइट से लिया है, ये ओपन सोर्स है, एनीबडी कैन टेक इट बाय लॉगिन, एंड आप उसको जो भी आपको पर्टिकुलर एरिया चाहिए वो आपको जियो रेफरेंस इमेज देंगे, आपको प्रोजेक्ट करना है कर सकते हो। ठीक है, तो आई हैव टेकन द इमेज फ्रॉम द भुवन वेबसाइट एंड यू कैन सी दिस ArcGIS पे मैंने इसको किस तरह से खोला हुआ है, और ये आप मीटर्स देख रहे हो, ये आपको बता देगा कि ये आपका जियो रेफरेंस इमेज है। अगर ये डिग्री में आ रहा है तो इट मीन्स कि ये प्रोजेक्टेड नहीं हुआ है। तो ये आपका फिरोजाबाद का इमेज है, सैटेलाइट इमेज है which we have taken for the digital elevation model. Now मेरे पास ये म्यूनिसिपल बाउंड्री थी फिरोजाबाद की which we have drawn, वो जियो रेफरेंस थी। तो हमने जब उस शेप फाइल को, ये जो हमारी पॉलीगन फाइल था ये हमने यहाँ खोला, इसको ये यहाँ पर अपने आप आ गया कि ये एरिया मेरा है, मतलब ये फिरोजाबाद है हमारा, ये हमने खोला इसको इसके ऊपर और ये हमने इसको क्रिएट किया। आपको ये दिख रहा होगा ना ये ब्लू, आई शो इट इन माय, दिस इज ब्लू,
ये ब्लू दिख रहा है, ये नाले में नदी के पास जा रहा है। ये इसका ये आप देखिए लीजन हाई लो एरियाज एंड दिस इज द हाई एरियाज। इसी से हम लोगों ने कंटूर भी बनाया। यू कैन टेक द कंटूर फ्रॉम हियर ओनली। तो आप ये देखिए आपका ये हाईलैंड एरिया है ये। तो जो आप देख रहे थे ना, हमने पीछे दिखाया था आपको कि यहाँ पर ये सारा पानी जाता है, यहाँ से पूरा पानी जाता है, ये सारे इन नालों में जाता है। तो ये जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम था ना, वो यहाँ और यहाँ नहीं था, मेन सिटी एरिया में इधर वाले एरिया में था, जो लॉक्ड हो जाते थे क्योंकि कंक्रीट रोड्स की वजह से, सेटलमेंट की वजह से हमें गलियाँ बारिश में भर जाती थी। और ये जो हाईलैंड की वजह से, ये जो हाईलैंड के एरिया है, तो यहाँ पर का वाटर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। वाटर का प्रॉब्लम मतलब लोगों ने क्या करा हुआ था कि हर किसी ने समरसेबल लगाया हुआ था, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो नीचे जा रहा था। तो फिर जब हमने ये स्टडी किया तो उसके बाद उन लोगों ने ये प्रॉब्लम को किया और उन लोगों ने फिर मना किया कि सेंट्रल पार्ट में आप कोई समरसेबल नहीं लगाएगा। और फिर जो एक प्रोजेक्ट फिर ये हुआ कि आप जो ये रिवर है वहाँ से हम पानी लेकर सिटी को प्रोवाइड करेंगे, साफ पानी इधर से लेकर यमुना से। तो आप ये देख सकते हो, ये बहुत डिजिटल एलिवेशन मॉडल आपने बना लिया विद द हेल्प ऑफ द डेटा, यू कैन सी। एंड हमने फिर इसको स्केल, ये स्केल आपका ये है, ये आरएफ है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आई होप आपने फर्स्ट सेशन में ये क्लियर किया होगा। इसके रिगार्डिंग किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो प्लीज़ आप लोग कंसीडर करिएगा कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें आप कंटूर दिखा सकते हो, इसमें आप आस्पेक्ट दिखा सकते हो, हिल साइड दिखा सकते हो, आप सब कुछ दिखा सकते हो उसमें। अब हम मैंने नेक्स्ट केस स्टडी ली थी, वो तो मैंने आपको दिखा दिया जो मैंने सैटेलाइट इमेज से किया था, या प्राइमरी डेटा से, या सेंसस डेटा जो मुझे नॉन स्पेशल डेटा था जो एक्सी में मेरे पास था, मैंने उसको किस तरह से क्रिएट करके वो मैप्स क्रिएट किए थे। यहाँ पर अब मैंने स्टडी लिया है झालू का, अगर इफ वी आर हैविंग द इमेज, हेलो, हमारे पास कोई भी इमेज है और उसके हमारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं है, तो हम लोग ये गूगल अर्थ से बहुत इजीली ले सकते हैं। ये मैंने जैसे पॉइंट्स लिए हैं या आपने रोड नेटवर्क ले लिया, आप लोग ने ज़रूर गूगल अर्थ को होगा, ज़रूर देखा होगा कि किस तरह से हम एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज मी, Yes, ma'am. Ma'am, am I audible? Hello. हेलो, Yes, ma'am, you're audible. You can continue. थैंक यू फॉर गिविंग मी 5 minutes. You sure, ma'am. Now, hello, yes, hello. Yes, ma'am. If you want to take some Yes, I'm break, you going to can do that. continue. Thank you. Hello.
सर वो एक्चुअली मुझे कुछ वो आगे इस पे दिखाना था लाइव, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैम आप इसी से कंटिन्यू कर लीजिए, वी विल ट्राई टू हैव अनदर सेशन देन व्हेन योर नेटवर्क इशू विल बी फाइन इफ इट्स पॉसिबल. Ma'am, you are not audible. हेलो, यस आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद माय गूगल अर्थ का यूज़ कर सकते हैं जियो रेफरेंसिंग के लिए। आपने देखा होगा तो गूगल अर्थ को यूज़ भी किया होगा। तो ये मैंने देखिए आप ये बाउंड्री मैंने बनाई गूगल अर्थ का पीस। हेलो, ये इमेज है गूगल अर्थ का जो मैंने इसको स्क्रीनशॉट के तौर पे लगाया है। ये हम लोगों ने बाय रोड, क्योंकि हमारी जो इंडियन सिटीज़ में जो प्रॉब्लम है या इंडिया में जो प्रॉब्लम हमारे फेस करते हैं हम लोग, छोटी छोटी के उन लोगों के पास म्यूनिसिपल बाउंड्रीज ही नहीं होती हैं। कैसे है, क्या है, कितना बड़ा एरिया है, बट उनके पास ये एरिया तो होता है कि हमारा एरिया इतना बड़ा है, मैप आपको कभी नहीं मिलेगा। बहुत दिक्कत होती है उसकी वजह से कि हम लोग किस तरह से काम कर, हमें पर्टिकुलर सिटीज़ के लिए कोई काम करना है तो भी प्लानर्स के लिए बहुत दिक्कत होती है, इंजीनियर्स के लिए भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि म्यूनिसिपल बाउंड्री हमारी किधर जा रही है या क्या है। तो हम लोगों ने ये मैप भी हमने क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन डेटा बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए हमने प्राइमरी लोकेशन जो लोकेशन था हमारा वहाँ पर उसका इमेज के साथ हमने रोड से किस रोड तक उनकी म्यूनिसिपल बाउंड्री है, थ्रू विच ये झालू का जो है ना ये बाउंड्री है, किस प्लॉट से किस प्लॉट तक, किस वाटर बाउंड्री, वाटर है, वाटर बाउंड्री कौन सी है, वो सब करके फिर हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिए। आप ये देख रहे हो ये सब डिग्री में है अभी यहाँ पर, ये आप देख रहे हो नॉर्थ है, ईस्ट आप देख सकते हो। तो हम लोग ये इस पर यहाँ पर यूटीएम लेकर फाइल में यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे हैं, फाइल है, एडिट है, ये सब इनके टूल्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है जिसके जरिए हम लोग लेट्यूड रहेगा क्या लॉन्गिट्यूड रहेगा इजीली ले जा सकते हो। KML फाइल चली जाती है, इस फाइल को जो GIS जो गूगल उसको एक्सपोर्ट करके आप GIS में KML फाइल को आप ये फाइल खोल सकते हो। ये जैसे मैंने पूरा काम जो किया है वो मैंने गूगल अर्थ में जो शेप फाइल मैंने वहां क्रिएट की थी, मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ। इतना ही होगा, इसमें एनालिसिस कुछ नहीं हो सकता है, डिजिटाइजेशन हो सकता है। मतलब यहाँ पर मैंने जो हम वहाँ पर बिल्डिंग के नाम से जैसे मैंने आपको दिखाया था कि बिल्डिंग हमने लिख दिया, मैंने यहाँ पर उमरुल जो जो भी एरिया है मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। बस स्टैंड का, बस स्टैंड की आप देख रहे हो ये ऑर्चर्ड है बनाई हुई है ये अंदर की, मेजर रोड, स्टेशन रोड, जितनी जो जो नाम थे वहाँ पर हमने सब कुछ दिया हुआ है। बट यहाँ पर हम एनालिसिस नहीं कर सकते, एनालिसिस वी कैन डन ओनली ऑन GIS सॉफ्टवेयर पे हम कर सकते हैं। और ये तो हमारे सिर्फ और सिर्फ एक टू स्टडी, जो हम स्टडी कर सकते हैं वो है। हमने फिर ये यहाँ पर ये पॉइंट्स लिए थे, 4 पॉइंट्स लेकर, जो आप नॉर्थर्न ईस्टर्न ये जैसे है सब कुछ आप लेकर और उसको वहाँ प्रोजेक्ट करिए GIS सॉफ्टवेयर में, और वो आपका मैप तैयार हो जाएगा। और गूगल और एक और चीज़ देता है आपको, ये आप देखिए टेम्पोरल डेटा देता, जैसे ये 2014 पर मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। अब जो लेटेस्ट आएगा हमारा 2021 आ जाएगा, ये 2014 है, उससे पहले की भी अभी अवेलेबल हैं।
तो हम यहाँ से टेम्पोरल डेटा भी दे सकते हैं और हम लोग इजीली देख सकते हैं। तो डिफरेंट इमेजेस हम यहाँ से लेकर और उसको जीआईएस में ले जाकर हम वहाँ पर ये देख सकते हैं कि सिटीज किस या कोई पर्टिकुलर सिटी किस तरह से डेवलप हो रही है या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है फॉर द डेवलपमेंट पे या कैसा होना चाहिए, हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए आप देख रहे हो ये जो ये है ना, जैसे वहाँ पर जीआईएस में था पॉलीगन का, ये पॉलीगन का है, ये रोड बनाने के लिए है। इमेज आप यहाँ पर खोल सकते हो, स्केलिंग सब चाहिए तो इजीली हमें यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि टोपो शीट हम कहाँ जाके देखेंगे, कहाँ से आप घर में हो, मतलब लैपटॉप है आपके पास और आपने गूगल अर्थ इमेज लिया और आप इजीली उसको कर सकते हो, आपको टोपो शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाउएवर अभी तो जियो रेफरेंस इमेजेस भी अवेलेबल हैं, बट आई एम टेलिंग यू कि ये एक मेथड है, आप ये कर सकते हो यूज़। और यहाँ पर आप किस तरह से बना सकते हो, जैसे आप ये रेड वाला पार्ट देख रहे हो, ये सारा ना कमर्शियल एरिया है, यहाँ पर ये मेन मार्केट एरिया है, ये सारा मेन मार्केट एरिया है। ये सब हमने ना प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया था, उसके बाद हमने ये मार्क किया और ये हमने यहाँ पर डिजिटाइज किया। और ये जो कलर्स मैंने दिए ना, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सारे ना जब अभी हम मैप बनाते हैं, स्पेशली जब हम लैंड यूज़ का मैप बनाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने रेड दे दिया, कोई और ग्रीन दे देगा या ब्लू दे देगा, किसी को कुछ भी अच्छा लग सकता है। बट ये एक रूल्स बने हुए हैं कि मतलब आपको पर्टिकुलर लैंड यूज़ के लिए एक पर्टिकुलर कलर देना है। मास्टर जैसे हम लैंड यूज़ मैप यूज़ करते हैं तो उसमें सारी कोडिंग होती है, उसमें दिया हुआ होता है कि इस के लिए ये कलर है, कमर्शियल के लिए रेड है, पब्लिक स्ट्रीट्स के लिए पब्लिक प्लेसेस के लिए पर्पल है, वाटर बॉडी के लिए ब्लू है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा विच वी हैड, कि जैसे मैंने देखा, अच्छा यहाँ पर हम लोगों के कमर्शियल एरियाज थे, तो ये हमने यहाँ पर प्रपोजल दिया है डस्टबिन का, किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर हम डस्टबिन दे सकते हैं या कहाँ कहाँ रिक्वायर। जिस तरह अब ओपन डेफिकेशन का यहाँ भी प्रॉब्लम था, यहाँ क्या था, यहाँ ये वाटर बॉडीज के पास, तो हमने यहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटी दी थी कि यहाँ पर आप कम्युनिटी टॉयलेट कर दीजिए। जहाँ जहाँ स्लम है, आप येलो में देख सकते हो ना, हमने स्लम एरिया मार्क किए थे, ये मार्क किया था, ये एरिया है, यहाँ पर भी स्लम था, एक यहाँ स्लम है, तो हमने यहाँ पर सब जगह हमने कम्युनिटी टॉयलेट का प्रपोजल दिया था कि हम यहाँ पर प्रपोजल रखेंगे कि कहाँ कहाँ टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट तो हर घर में हमें देना ही है। क्योंकि स्लम जो है वो रेगुलराइज नहीं होता है, वो ऑथराइज उनका एरिया नहीं होता है, तो हम उनको घर में नहीं दे सकते हैं, तो हमें उनके लिए क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना है, तो हम कम्युनिटी टॉयलेट के लिए जाते हैं। अब ये देखिए फॉर टॉयलेट, मैं देखिए कम्युनिटी टॉयलेट है, ये सब कम्युनिटी टॉयलेट, ये पब्लिक टॉयलेट हमने दिया है क्योंकि ये सारे ना, ये ब्लू ब्लू में आप जो देख रहे हो ना, ये इंडस्ट्रीज हैं, ये पब्लिक प्लेसेस हैं, ये और here in the commercial area we have given the public to, क्योंकि कमर्शियल एरिया में प्रॉब्लम होता है कि लोगों को जब नहीं मिलता है तो वो खुले में, अगेन द प्रॉब्लम हैपन के खुले में करते हैं, तो हमने फिर वहाँ पर क्योंकि एरिया बहुत छोटा था तो उसमें बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम पॉपुलेशन के हिसाब से ही सारी जाते होंगे, वो सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं और उसको इस तरह से डाल कर फिर हम लोग एनालाइज करते हैं।
कैन सी, ये देखिए ये स्लम एरिया है, ये हमने कम्युनिटी टॉयलेट दिया है क्योंकि ये ओपन डेफिकेशन एरिया था हमारा, ये भी ओपन डेफिकेशन एरिया है क्योंकि ये भी छोटा सा वाटर बॉडी था, तो लोग जो है क्योंकि ये स्लम था ना तो लोग इधर जाते थे क्योंकि उनको पानी भी मिल जाता था। ये जो मेरा है एक हमारा स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट था, प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट आगरा सिटी का। तो ये तो मैंने एक प्रोजेक्ट का वो बताया है कि किस किस तरह से हम लोगों ने किया था। हालांकि जीआईएस के लिए हम लोगों को ये रिक्वायर्ड, हमने बेस मैप बनाया था विद द हेल्प ऑफ जीआईएस। हमने एनआरएससी से सैटेलाइट इमेज लिया, जिसके बाद हमने डिजिटाइज किया था मैप को, और डिजिटाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी बिल्डिंग ऑफ एंटायर सिटी। तो फर्स्ट वी हैव कर, फिर हमने उस पर्टिकुलर एरिया का एक एक बिल्डिंग को डिजिटाइज करके उसका डोर टू डोर सर्वे करवाया था। सर्वे कराने के बाद हमारा उसमें बहुत सारी चीज़ निकल कर आई, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी जो कि कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले फॉर सिटी हमें रिक्वायर्ड। फिर हमने जियो रेफरेंस इमेज लिया जो कि हमें सैटेलाइट इमेज से मिला, और फिर हमने उसके स्पेशल एट्रीब्यूट्स जो कि हमने स्पेशल एट्रीब्यूट उसको स्पेशल एट्रीब्यूट्स को हमने लिंक किया, हमने जो एक हेल्प करने। ये देखिए आप, ये मेरा वार्ड बाउंड्री था जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जो हमने लिया था। Recording in progress. क्या होगा? हेलो हेलो हेलो। I'm going to continue with my last case study of Agra Municipal Corporation, which this is the map which we have created on GIS. This is the municipal boundary, and this is the map which we have created. डोर टू डोर सर्वे कराने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, वो एक म्यूट थी। Hello, which we have, this is the GIS survey format.
ये सर्वे फॉर्मेट था जो जीआईएस के ही लिए बनाया गया था, क्योंकि हम लोगों को जितना भी डेटा था वो सारा हमें कलेक्ट करना था, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स जो मैनेजमेंट हमारा था उसमें सारे हमें एट्रीब्यूट्स कलेक्ट करने थे। और उसके बाद ये जीआईएस जो सर्वे फॉर्मेट था इसके थ्रू हमें करना था, और उसको हमें सेव करना था एक्सेल फाइल में। उस एक्सेल फाइल के ही ये जिससे हमें ये एरिया मिल जाता, ये सब कुछ, और हमको उसे कनेक्ट करना था जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा था, जो हमने बिल्डिंग हमने ब्लॉक्स जो पूरे क्रिएट किए थे, उसको स्पेशल डेटा को हमें इस नॉन स्पेशल डेटा से कनेक्ट करना था, जिससे ये क्लियर हो जाता कि कितना बड़ा एरिया है पर्टिकुलर बिल्डिंग का, ये कितने फ्लोर्स हैं उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के, जिससे हमें प्रॉपर्टी टैक्स लेना है और कितना लेना है। ये जैसे हमारा निकल कर आ जाता है कि हम कोई भी अब हम क्लिक करते तो ये सारी उसके एट्रीब्यूट्स हमारे आ जाते। प्रॉपर्टी का नंबर हमने क्रिएट किया, वार्ड नेम क्या था, ब्लॉक नेम, मोहल्ला नेम, ओनरशिप टाइप, ओनर नेम। अब मैं मेरी ये केस स्टडीज़ थी जो मैंने अभी शो कर दी हैं। अब मैं आपको डेटा सोर्सेज भी बता दूं कि हम लोग किस किस वेबसाइट से हम डेटा ले सकते हैं टू क्रिएट द डेटा, टू डिजिटाइज द मैप एंड टू एनालाइज द डेटा, जो कि ऑलरेडी जो सैटेलाइट इमेजेस लेते हैं, जैसे कि यूएसजीएस है, भुवन वेबसाइट देता है हमें, ये इजीली अवेलेबल है। भुवन से आप लोग लॉगिन आईडी करिए और ले सकते हो। नेक्स्ट इज गूगल अर्थ है, गूगल अर्थ इमेज से भी ले सकते हो। उसके बाद IIRS, जिससे हम ये पेड देता है, IIRS में ऐसे डेटा नहीं देता है, ये पेड डेटा होता है, बट इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है। तो फॉर एनी कमर्शियल जो हम क्रिएट करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट में हमने IIRS से, NRSC से हमने डेटा लिया था हैदराबाद से फॉर आगरा के लिए, वो पेड डेटा था, क्योंकि हम लोगों का उसको एक एक बिल्डिंग का हमें चाहिए था, हमारा रेजोल्यूशन भी उसमें अच्छा चाहिए था, हमें एक एक बिल्डिंग का डेटा कलेक्ट करना था, जिसको हम स्पेशल डेटा से स्पेशल डेटा को फिर नॉन स्पेशल डेटा से कलेक्ट करके उसके बाद हमें प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट का पूरा GIS से लिंक करके हमें लाइव उसे बनाना था कि किस तरह से हम प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू GIS, और उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं वेरी इजीली। अपडेशन के लिए आप ईयरली डेटा लीजिए, या जो भी आपको अपना रखना है कि हमने ये सारा डेटा क्रिएट किया फॉर पर्टिकुलर सिटी, एंड फॉर द आफ्टर 10 ईयर्स और आफ्टर 5 ईयर्स हम उसको विद अनदर इमेज, जो भी फर्दर बिल्डिंग्स बने हैं या सेटलमेंट्स बने हैं या सिटी जिधर भी ग्रो कर रहा है उनको भी उसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है जिसमें एक ही फ्लोर था, उसमें सेकंड फ्लोर आ गया या थर्ड फ्लोर और बढ़ गया, तो हम उसमें एनालाइज करके उसको वापस बना सकते हैं। These are all the softwares of GIS and digital image processing. GIS में आपको जैसे कि पता है कि वो हम लोग पॉलीलाइन, लाइन, पॉलीगन, पॉइंट हम ये सब कर सकते हैं। ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, आर्क इन्फो है, आर्क GIS है, ये सारे ये तो पेड सॉफ्टवेयर्स हैं। कुछ सॉफ्टवेयर बहुत इजीली अवेलेबल हैं जो कि हम पेड नहीं है, ओपन है। ये QGIS जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड भी आपको मिल जाएगा। ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये सारे GIS के सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी काम करने के लिए GIS का ये सारे सॉफ्टवेयर आप ले सकते हो। ये आर्क इन्फो है, आर्क GIS है, मैप इन्फो, GRAS, जियो मीडिया, जियो कॉन्सेप्ट, विन GIS, माइक्रो स्टेशन, ऑटोकैड, QGIS। आपके लिए जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर होगा वो ऑटोकैड होगा, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स तो स्पेशली काम जो करते हैं वो ज़्यादातर ऑटोकैड पर ही करते हैं। और अब हम इसमें कैसे कैसे अब क्या क्या यूज़ कर सकते हैं विद द, आप ऑटोकैड पे भी जियो रेफरेंसिंग बहुत आराम से कर सकते हो, वो एक पूरी क्लास उसके लिए चाहिए, इसको स्टडी कर, इसको बताने के लिए। अब जो ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ये रिमोट सेंसिंग जो डेटा होता है हमारा, ये उसमें काम आते हैं। जैसे ये एडास इमेजिन है, इसमें आप पिक्सल बाय पिक्सल को डेटा को ये एनालाइज करता है। ये ER मैपर है, ILWIS, ENVI, ECI Geomatica, ArcView Image Analysis, TNTMIGS, eCognition, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं।
इनमें ज़्यादातर तो वैसे वही हैं जो पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, बट ये कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। इनको आप अपने आराम से उसमें अपने लैपटॉप में उन्हें डाउनलोड करिए उनका, और हम लोग उसको बहुत सीखने के लिए स्टार्टिंग में, जैसे स्मार्ट सिटीज़ के लिए हम किस किस तरह से काम करें, जो मैंने प्रॉपर्टी टैक्स का आपको अभी बताया है कि प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट हमने किस तरह से जीआईएस से लिंक किया उसको, क्योंकि फॉर द स्मार्ट सिटी हमको चाहिए कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, हमें स्मार्ट हो जाए, इजी हो जाए, फास्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें डेटा जो है जीआईएस से लिंक करना था। तो जीआईएस के बिना स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती, तो जीआईएस इज मस्ट। इवन अभी अगर हम विद जैसे जो जीआईएस जो टेक्नोलॉजी है अगर हम उसको देखें, तो जो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं या जो इतना भी सारा कुछ होता है उसके लिए जीआईएस रिक्वायर्ड है, क्योंकि डेटा अगर आपका ह्यूज है और आपको एनालिसिस करना है तो आप एक और स्मार्टली करना है तो आप जीआईएस यूज़ करेंगे। मैनुअली करना है तो वो बहुत टाइम टेकिंग भी होता है, और उसमें कई बार मैनुअली चीज़ों में हम कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है, मगर इसमें हम लोग प्रॉब्लम का जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हम मैनुअली नहीं कर रहे हैं, डेटा ऑलरेडी उसमें है, चाहे वो लैक्स ऑफ डेटा है, लैक्स ऑफ डेटा को हैंडल करना स्पेशली मैनुअली बहुत डिफिकल्ट है। जो प्रॉब्लम हमने ये आगरा में देखी थी, बिकॉज प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट के लिए उनके पास बहुत सारे रजिस्टर्स थे, इतने रजिस्टर्स उनके पास थे, और वो मतलब कोई कोई रजिस्टर 1950 से 1930 से उनके पास था, उनकी लैंग्वेज भी बहुत अजीब थी, और उसमें वो लोग कर रहे थे, उसी से अब तक प्रॉपर्टी टैक्स उनका चल रहा था, जो कि हमें उसे अपडेट करना था थ्रू जीआईएस। और वो इतना डेटा कि उनको खुद नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जीआईएस की हेल्प से वो इजी हो जाता है, क्योंकि वो डेटा एक जगह हमारा आ गया, उसके लिए हमें बहुत सारे रजिस्टर्स या बहुत सारी अलमीरा की ज़रूरत नहीं है। जीआईएस में हमने उसे स्मार्टली बनाया, डिजिटाइज किया, और एक जगह हमने उस डेटा को रख दिया, और हम उसी को अपडेट भी इजीली कर सकते हैं। उससे एक रैशनैलिटी भी आ जाती है कि प्रॉपर्टी टैक्स में कि जो बिल्डिंग का एरिया है उसके हिसाब से आप प्रॉपर्टी टैक्स भी डिफाइन कर सकते हो, रोड विड्थ या जो भी फैक्टर्स हम लेते हैं। इफ एनीबडी इज एनी क्वेश्चन तो प्लीज, थैंक यू फॉर गिविंग मी। Okay, so thank you, Madiha ma'am. I think that network is a kind of a problem in today's session. But I think, and there is actually the request from the participants also that we can arrange some another time your session as per your convenience, so that if we're going to have another not that much long, as the presentation you had mentioned is totally fine. But I think when you can say that practice on software, so I think we can arrange and we can invite same participants in the workshop, so it will be fine for you, I think. Yes, yes. Okay, so Madiha ma'am, there's one question from Kirti Sharma ma'am, I think. She actually wants you to show how to create the contours. So can it be possible now? Actually I wanted it to show it to you. Actually अभी तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, बट हाँ मैं जैसे कि ये डिजिटल एलिवेशन मॉडल मैं आपको दिखा रही हूँ, उससे हेल्प से आप कैसे कर सकते हो। ये डिजिटल एलिवेशन मॉडल है ना, जी। इसी ये जो हमने डेटा हमने यहाँ लिया है, अगर आप ये डेटा मैनेजमेंट टूल्स पर जाएंगे तो यहाँ पर एक कंटूर का आता है, यहाँ पर क्रिएट कंटूर। मैंने यहाँ कंटूर इवन बना भी रखे थे। आई वांटेड इट टू शो के मैंने किस तरह से, इसमें आपके पास हमने सैटेलाइट से इमेज ले लिया है, हमें उसे जाकर कुछ करना नहीं है, बट हमें यहीं से सिर्फ उसको यहाँ पर कंटूर का ऑप्शन आता है, उसमें आपको क्लिक करना है, एंड
यहाँ ऑलरेडी उसमें डेटा दिया हुआ है और वो कंटूर निकल कर आपके आ जाएंगे। Okay, so so I किसी think एरिया का आपको चाहिए, बट द थिंग इज कि आपके पास जैसे आपको किसी भी सिटी का चाहिए, अब वो जो रेफरेंस्ड आपके पास इमेज जरूर होना चाहिए। so और ma'am, उसका actually, there is, I think when you communicated with Anjali ma'am, so she also said that you can make a video session. So it is possible that all some kind of a practices you can do the screen recording and share with the participants. यस श्योर मैम। Sure. So it will be actually fine for us also as well as participants also, so that all of the functions. Let's say because I know by your presentation it's looking like you want to explain much more than what's there in presentation by experimenting it and while performing it on the software itself. So there's just a request from my side and on the from the participant behalf that if you can take a little bit of problem and you can make it a recording and share it with us so that we can share with the participant, and if any query coming up like that way, then I think we can arrange a session after FDP also. We have your contact number, we have the participants contact number also, so we can have a workshop in which you can have the participants as well as you can communicate and coordinate with each other. यस मैम श्योर मैम। मैम एक्चुअली जो जीआईएस सॉफ्टवेयर को सिखाना इतना आसान भी नहीं है और कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा स्टार्टिंग में, बट द थिंग कि अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ, अदरवाइज मैं आपको लाइव भी ये दिखाती। एंड अगर ये ऐसा होगा कि मुझे सिखाने का मौका मिलेगा तो आई विल श्योरली, मतलब मैं बहुत ग्लैड हूँगी कि मुझे आप अपॉर्चुनिटी देंगी कि मैं लोगों को सिखाऊँ। और इंटरेस्टेड हैं तो मैं श्योरली मैं सिखाऊंगी, मैं वीडियोस बनाकर शेयर करूँगी। श्योर मैम। Okay, so I think that will be fine. So thank you so much. There's one question which is coming up that you have mentioned number of softwares in the presentation, the last slide, and there's ArcGIS is there, there's QGIS is there, and one of my friend is also there working. She actually did, this one. Geoinformatics, she had something, so actually she is also here, so she wants to ask that QGIS, since it's been a free software, we can download it from the Google, and ArcGIS has some authorization. So if we are using QGIS instead of Esri ArcGIS, so what will be the difference in the efficiency? Are both the softwares having same efficiency? मैम एक्चुअली मैंने क्योंकि QGIS पे काम नहीं किया है, बट आई Okay, हैव वर्कड ऑन ArcGIS सॉफ्टवेयर okay, and I, because it is the paid software, of course efficiency is more in ArcGIS। okay, और ArcGIS में भी क्योंकि जिस तरह से हम बात करते हैं आर्क मैप की, तो जो प्रीवियस वर्जन्स हैं वो इतना अच्छा एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं जिससे जो कि नए कर पाते हैं। तो जो भी अपडेशन होता है, कहीं पर भी अपडेशन होगा तो जो लेटेस्ट होगा वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। okay, ma'am. So I think thank you so much for your time, and I would now request Sunita ma'am to kindly, give you a vote of thanks from the department and participants. Sunita ma'am, are you there? I'm there. I'm there. Okay, ma'am. Hi, Madiha. How are you? It's You're a true example of an Indian woman with kids around and still delivering a session with true motivation of continuing the academics, and you have such a good hand on GIS. We are so proud of you, and thank you थैंक यू। so much for थैंक यू मैम। giving this session, and I hope we could have more of you. And I'm sure participants, they can understand all the constraints that we work in, the internet issues, everything, and we are at home. But still, you could deliver so much, and you've given us a fair idea about GIS.
That's great of you. Thank you so much for consenting to come. Thank you so much. Thank you, And ma'am. I can see your husband around helping you out. Thank you. My Thanks to him husband. also. Okay. Okay. Thank you. Let this corona be over, then we will have you here uh, as a live teacher with us. Hmm? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Madiha. God bless. आप भी करो भाई. Thank you, Madiha. Thank you, ma'am. Okay, so I want to thank all the participants for their time. The feedback link, feedback attendance link is already there in the chat box, so you can fill up that. And thank you for all your presence in all the three sessions. So tomorrow, again, we will be going to continue the third day of FDP at 9 a.m. tomorrow. And there will be the session by Dr. Mehak Sharma. And I think it will be more beneficial for you as we are proceeding towards the this FDP, getting more into the title of the sustainable and contemporary infrastructure. So thank you so much, and have a fine evening, and thank you. Bye. Thank you.